Ma'am, page number? Yes, children. Done. Page number, ma'am. Page 60. 60. You're able to 60. see the screen? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुनगुनाइए और पंक्ति के लिए एक क्रिया शब्द लिखिए. गुनगुनाइए means what? To sing. Sing and write. You have to sing the sentence there. Okay? तो गुनगुनाना है, आपको क्या करना है? गुनगुनाना है. गुनगुनाना means to sing. खूब दूर की दौड़ लगाऊं, खूब दूर की दौड़ लगाऊं. Say all of you. You have to sing like a song to that. Okay? खूब दूर की दौड़ लगाऊं. खूब means what? More. Okay? Yeah. दूर means what? Far. Right? Far. Far. Daud means what? Run. Daudna. Run. It is given right there. What is there? Daudna. Run. See all of you. Daudna. Run. Daudna. Run. Daudna is a kriya, right? Kriya. See here. एक क्रिया शब्द लिखिए. क्रिया. What is kriya? In the last time I have shown you the video also, no, related to kriya. Yes, action words. Yeah. Action words are verbs and they are called as kriya in Hindi. काम का होना या करना, काम, work. Okay, if the work is happening or by it is being done with somebody, then it is called as kriya. Can you say one kriya? Any one kriya, Harshini? Say one kriya. एक क्रिया शब्द बताओ हिंदी में. हर्षिनी, एक क्रिया शब्द बताओ हिंदी में. हाँ, क्रिया शब्द बताओ एक. Ma'am, can I say? खेलना. खेलना. गुड. बैठना. खेलना. बैठना. हाँ, बैठना. और बताओ. चलना. चलना. हाँ, झूलना. झूलना. हाँ, उड़ाना. उड़ाना. क्या उड़ाई आप लोगों ने? पतंग उड़ाई. हाँ. हाँ, किस किस ने पतंग उड़ाई? मैंने उड़ाई. हाँ, यहाँ पर भी ये लड़का उड़ा रहा है. उड़ाना, फ्लाई. ओके, या तो उड़ाना. तो ये क्रिया शब्द है. ठीक है. सोना, उठना, बैठना, भागना, चलना, ये सारे क्रिया है. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, खूब दूर की दौड़ लगाऊं, दौड़ना, रन, झूला झूलूं और झुलाऊं. तो क्या लिखना है वहां पर हमें? क्या लिखना है? बोलो. झुलाना. झूलना. झूल. हाँ, स्विंग. झूला झूलूं और झुलाऊं. झुलाऊं है ना, तो झुलाना लिखो. झुलाना, स्विंग. झुलाना, स्विंग. झुलाना, स्विंग. लिखो. राइट. देखो, ये देर से एंटर हो रहे हैं या क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या है? श्रेयांश, शाही श्रेयांश, आज हो आप? अच्छा. सहस्रा अभी ज्वाइन हो रही है. नहीं नहीं नहीं. Is that making sounds? झुलाना. इंग्लिश में क्या कहते हैं फिर इसको? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विंग. ओके. झूलना. हाँ, तो लिखो. स्विंग. SWING. This is creating problem, children.
swing. Jhulana we are writing, no? Jhulana ki matra you have to write. Laughter. Jhulana. Jhulana is choti u ki matra. Jhulna not. Jhulana we are writing, right? So Jhulana. So we are writing here this girl is swinging, right? So somebody is making her to swing. So we are writing the kriya. हम किसका क्रिया लिख रहे हैं? इस लड़के का क्रिया लिख रहे हैं. ये क्या कर रहा है? झूला रहा है ना? झूला, झूलूं और झुलाऊं. तो यहाँ पर ये झुला रहा है, झुलाऊं है ना, तो इसको हमने बनाया झुलाना और वी हैव रिटन स्विंग. ओके. और तो नेक्स्ट क्रिया देखो कौन सी है वो? कागज की मैं नाव तैराऊं. कागज की मैं नाव तैराऊं. कागज मीन्स व्हाट? कागज मीन्स व्हाट? पेपर. पेपर. गुड. कागज की मैं नाव तैराऊं. तैराऊं मीन्स व्हाट? Swim. 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 But here the paper boat will not swim, right? It will float. What is the correct word? Float. Float. Tairna is Float. swim. Okay, tairna is swim, but it differs with the, like if any people are swimming, it is called swimming. But here the paper boat will not swim, it will float, right? So we will be writing the same word in Hindi, tairna only, but it differs in English. Okay, tairaun. For this tairaun word, we will write tairna. तैराना. तो यहाँ पर ये तैरा रहा है. He is making the boat to float, right? So तैराना. This board is creating a problem, children. तैराना. Okay. तैराना. Float. F L O A T. Float. Okay. ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं. ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? उड़ाना. उड़ाना. उड़ाना means what? Kiting. Fly. Fly. पतंग यानी क्या है? Kite. ऊंची यानी क्या है? ऊंची. फिर ऊंची किसे कहते हैं? High. High. Okay. High. I will make the kite to fly high. ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं. उड़ाना. उड़ाना. क्या है ये? उड़ाना. 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 उड़ा. ड़ में आ की मात्रा ड़, ना में आ की मात्रा ना. उड़ाना. उड़ाना. Fly. 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 उड़ाना. Fly. उड़ाना. Fly. Done, ma'am. उड़ाना. Fly. Dana. Fly. 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 Here this S was being erased. Did you write swing? SWING. Swing. Yeah, ma'am. Float. Fly. And here, what is the next one? पौधों को मैं जल से सींचूं. पौधों को मैं जल से सींचूं. Jal means what? Water. Water. Paudha means what? Plant. Plant. Paudho means many in number. Okay. Paudha means one.
पौधों means what? पौधे actually. Many. When we are using in this sentence, we will say पौधों. पौधों को मैं here. Who is मैं here? This boy is मैं here. Okay. So this is मैं is sarvanam, right? मैं is sarvanam, right? So when we are Yes, ma'am. using in the place of noun, संज्ञा के बदले में प्रयोग में आता है सर्वनाम. कागज की मैं. Here also this boy is also telling for himself he is using मैं. ठीक है. तो पौधों को मैं जल से सींचूं. सींचूं means what? Watering. Watering. सींचना. Right on. सींचना. Sichna. Sinchna is, we will be using this word for plants. We will do watering for plants. No, that is called as Sinchna in Hindi. Okay, watering the plants is called as Sinchna in Hindi. And this is Sinchna. 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 स में बड़ी की मात्रा बिंदी. फिर च ना में आ की मात्रा. सींचना. Watering. सींचना. Watering. Done, ma'am. Sinchna. नाम है कभी मैं साइकिल तेज चलाऊं. कभी मैं साइकिल तेज चलाऊं. Cycle, you all know. Cycle. Some words are English, Videshi words and Hindi which are added, like some bank, okay, officer, train, truck. These all are what? English words only. Cycle. So these are also added in the Hindi. So these are same. We can't have the another word for this. Okay. So in Hindi that cycle is cycle. Kabhi मैं cycle तेज. What do you mean by तेज then? Fast. Fast. Tez means fast, speed. Okay. Chalaun means what then? driving, going, Riding a bicycle. We will say riding a Riding, bicycle, right? Riding a Riding bicycle. Okay. bicycle. So here riding will come. Chalaun. You need to write here chalaun. Ma'am, we can write chalana. Chalana. Chalaun. You have to change into chalana. Chalana. Cycling. Riding. Riding. Chalana. Ma'am, here only This IIPs are troubling a lot. Done, ma'am. Writing something, it is going somewhere. Okay, riding. RIDING, riding. Chalana, riding. So once again, we will read this together. खूब दूर की दौड़ लगाऊं. खूब दूर की दौड़ लगाऊं. झूला झूलूं और झुलाऊं. झुलाऊं. कागज की मैं नाव तैराऊं. कागज की नाव तैराऊं. ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं. ऊंची कभी पतंग उड़ाऊं. पौधों को मैं जल से सींचूं. पौधों को मैं जल से सींचूं. कभी मैं साइकिल तेज चलाऊं. कभी मैं साइकिल तेज चलाऊं. तो ये क्या है? सब सारे क्रिया शब्द है ना? दौड़ना, रन. से ऑल ऑफ यू.
Daudna Daudna run. run. Jhulna swing. Swing. Jhulna swing. Jhulna swing. Jhulana swing. Jhulana swing. Tairana float. Terana Float. Udana fly. fly. Udana fly. Sinchna watering. Watering. Sinchna watering. Watering. Chalana riding. 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 Yes, good all of you. So what you need to do, you have to take out your notebooks now and write this 6 है ना, पूरे कितने हैं? मैम 6 है। 6 पूरे गुड मैम क्रिया लिखो और उसके साथ इंग्लिश मीनिंग लिखो क्रिया शब्द हेडिंग लिखो, आज की डेट डालो 18/1/2021, आज की डेट डालो, write down CW and you need to write kriya shabd or heading, write down kriya shabd, only write down this kriya shabd and write there daudna run as meanings you write down. Okay, daudna run, jhulana swing. Ma'am, only meanings you should write. Yes, only we have to write this red color one, whatever is there we have written now, so that you have to write. Tairana float, udana fly, Sichna watering, Chalana riding. This all will come in examination. Okay, so write down that. Yes, We also wrote in homework 5 Kriya Shabd. yes, you have written. So now you write down this with meanings. Okay, for today's class work, write down that homework. You learn this. Tomorrow I will conduct test on this. Okay. Okay, ma'am. Good. Start writing, all of you. Time up. It's time up, all of you. You can write in the afternoon, okay? When you are having leisure time, afternoon as homework, you can write in your notebook. Okay, I'm ending the class now. Bye, all of you. Write and send me, okay? Write and send me textbook and the notebook. Yes, Okay, yes. ma'am. Good, Harshini. Okay, Write in the ma'am. textbook, write the textbook, write the notebook, and both the pics you have to send. Textbook and notebook, both the pics you have to send. Bye, I'm ending the class. Bye.